Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we'll be covering the current affairs relating to economics for the upcoming CBSE Direct Recruitment Quota Examination 2026. In this video, I'll be covering current affairs from February 2025 of the topic economy. Now, first of all, the Union Budget 2025 was presented in February 2025 as well. So it was the record 8th Union Budget which was presented by the Finance Minister Nirmala Sitharaman. Okay? This was a record 8th consecutive time which she had presented it. The Union Budget, technically called as the Annual Financial Statement, under Article 112, lays out an account of the government's financial health. Next है ग्रामीण credit score. The Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced the Grameen Credit Score, a framework to people in rural areas. It is developed by public sector banks to assess the creditworthiness of rural individuals, thus facilitating easier access to loans. Next, Amitabh Bachchan ka there is an AI avatar. Hyderabad-based Icons Studio has partnered with IDFC First Bank to bring Amitabh Bachchan's AI avatar as the face of all banking communications at their Juhu branch. So this is not very important, but this is a very important news item. Grameen Credit Score. Okay, so basically this Grameen Credit Score will enable banks to give loans to rural people. Okay, and it will allow them to find the credit worthiness of these people. Okay. जो भी रूरल इंडिविजुअल्स हैं या रूरल एसएचजीज भी हैं उनका क्रेडिट वर्दीनेस फाइंड आउट करने में इट विल हेल्प देम एंड देन दे कैन बी गिवन लोन्स अकॉर्डिंगली. ठीक है. नेक्स्ट है न्यू 50 रुपीज़ नोट्स एंड इनकम टैक्स बिल. The RBI is going to issue new 50 rupees notes with Governor Sanjay Malhotra's signature. However, the old notes will remain valid. Finance Minister Nirmala Sitharaman also introduced the Income Tax Bill 2025 in February last year. The bill, once enacted, would replace the 6-decade-old Income Tax Act of 1961 and will likely come into effect on April 1st, 2026. This is again very important news item. ठीक है. तो जो Income Tax Act of 1961 है, that will be replaced by a new Income Tax Act and it will come into being in 2026 April. ठीक है. जो budget है ना, that I'll be the budget as well as the economic survey that I'll be covering in separate videos properly. ठीक है, thoroughly उसको करेंगे because questions are asked from these topics primarily. ये जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ इकोनॉमी का, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल you should have a cursory glance over it in case some question comes. But the budget and economic survey are important parts for which I'll be making separate videos. Next है IRDAI introduces Bima ASBA via UPI for insurance premiums. ठीक है. सो बीमा ASBA क्या है? IRDAI ने एक निकाला है. The IRDAI has allowed policyholders to set aside funds for premiums through a new payment mechanism called Bima ASBA, applications supported by blocked amount. तो इसमें बस होगा क्या, I'll just tell you. आपका जो भी अकाउंट है ना उसमें there will be some amount of fund which will be blocked. ठीक है. This blocked fund will be used for paying premiums of insurance policies which you may have bought. ठीक है, बस इतना ही है ये. बीमा ASBA इसको बोलते हैं, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. तो इसमें क्या लिखा है? दिस इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रीमलाइन द पेमेंट प्रोसेस फॉर लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, allowing policyholders to block funds in their bank accounts for premium payments, ensuring smooth transactions without immediate debts. ठीक है. तो ये आप याद रखिए.
IRDAI का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इट इज़ बेसिकली द प्राइम रेगुलेटर ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, so that is all. Next, income tax bill select committee form. So the Lok Sabha Speaker has formed a 31-member select committee to examine the new income tax bill. ठीक है, BJP MP Bajayan Jay Panda has been appointed as the chairman of the committee. ठीक है, नेक्स्ट है RBI बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी हाईलाइट्स. तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज दीज आर बाई मंथली एंड दे कीप चेंजिंग, सो नो नीड टू रीड दिस. ठीक है, ये पुराना है, February 25 का है. दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. इट माइट हैव बीन इम्पोर्टेंट बैक देन पर अभी नहीं. बस ये याद रखिएगा. RBI गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है. ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद रफ़ी कोमेमोरेटिव कॉइन. The government has announced rupees 100 commemorative coin honoring Mohammad Rafi's legacy. So commemorative coins are considered legal tender. ये बहुत important है. ठीक है, हमें लगता है कि नहीं, they are not legal tender, but they are indeed a legal tender and they are not released for general circulation. However, if if we are given this coin ना, तो legally we cannot refuse to accept this because it is a legal tender. ठीक है, तो इनका 100 रुपये का कोमेमोरेटिव कॉइन करा है मोहम्मद रफ़ी का लेगेसी सेलिब्रेट करने के लिए. नेक्स्ट है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs. So the center has launched the mutual credit guarantee scheme for MSMEs in Mumbai, which was announced in the union budget. It is aimed at boosting micro, small and medium enterprises. MSMEs को boost करने के लिए. इसमें बेसिकली क्या होगा? Collateral free loans to MSME by providing loans up to rupees 100 crores for the purchase of plant, machinery and equipment. ठीक है, तो क्या है? बेसिकली म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है. उसको जो MSME है उनको कोलैटरल फ्री लोन देंगे अप टू रुपीज़ 100 करोर्स. ठीक है, तो क्रेडिट गारंटी है. इसका मतलब क्या होता है कि द गवर्नमेंट विल गिव अ गारंटी टू द लोनिंग अथॉरिटी. जो जिससे भी लोन ले रहा है ना MSME, उसको गारंटी देगा कि इन केस दिस पर्सन डज नॉट पे देन द गवर्नमेंट विल बी लायबल टू पे. ठीक है, ऐसा सिस्टम रहता है क्रेडिट गारंटी स्कीम्स में. ठीक है, तो 100 करोड़ का आप दे दीजिए इसको लोन विदाउट कोलैटरल, बट इफ दैट person is not able, if that MSME is not able to pay the loan, then the government will pay. ऐसे करके होता है सिस्टम क्रेडिट गारंटी स्कीम्स का. ठीक है, नेक्स्ट है सिटी यूनियन बैंक wins 7 IBA Banking Technology Awards for the second year in a row at the 20th Annual Technology Conference held at Mumbai. This is not very important, but अगर पूछ लें तो बस सिटी यूनियन बैंक का आप याद रखिए कि इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं. ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन एंड पर्पल थीम. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी BIM coin, which is designed exclusively for the BIMTEX ecosystem. ठीक है, तो ये भी just once read type of current affair है. You should know this, but it is not very important. Not very likely that a question may be framed from here. Next, this is important. The 2025 Financial Literacy Week. The 2025 Financial Literacy Week was initiated by the Reserve Bank of India, an annual initiative aimed at promoting financial awareness among the people from February 24 to 28 under the theme फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेंस प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, तो इसमें क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डेट कि कब होता है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक. तो February 20, मतलब फेबररी में रहता है, फेबररी लास्ट वीक. ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे? हु हैज़ इनिशिएटेड इट? तो RBI. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ started this concept
of a financial literacy week. नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द थीम फॉर 2025? तो इसमें था वुमेन्स लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, फीमेल्स की फाइनेंशियल लिटरेसी पे था थीम। सो ट्राई टू रिमेम्बर दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज आइटम। नेक्स्ट है IRDAI एंड गोल्ड थीम। IRDAI forms a committee under ex-SBI chairman Dinesh Khara to review insurance law amendments। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कमिटी का चेयरमैन, कमिटी का मेन चेयरमैन पूछ सकते हैं, दैट इज़ दिनेश खारा कमेटी। ठीक है, एंड वो पूछ सकते हैं कि किस काम के लिए दिनेश खारा कमेटी। सो इट इज़ बेसिकली एम्ड एट रिव्यूइंग इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट्स। ठीक है, इनको लर्न करने के लिए क्या है, दिनेश खारा, खारा खारा पानी आपने सुना होगा, सॉल्टी वाटर। और फिर इंश्योरेंस, ऐसे आप इमेजिन कर लीजिए कि इंश्योरेंस अगेंस्ट सॉल्टी वाटर। अगर किसी ने इंश्योरेंस लिया हुआ है कि अगर हमारे को सॉल्टी वाटर आने लग गया अच्छे पानी की जगह, देन वी शुड रिसीव मनी। ऐसे करके लर्न करने के लिए दिनेश खारा, इंश्योरेंस अगेंस्ट सॉल्टी वाटर। ठीक है, so this is done. Next, so that is all for this video. We have completed the economy related current affairs of the month of February. Thank you. Please like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.